welcome to my channel. My name is Nykaa Earth Rhythm, and in today's video I have created this glowing makeup look under 500 rupees, and this makeup is close to my heart because I use it every day whenever I'm going out, and every product which I have shown in the video is under 500 rupees. And if you're interested, then keep on watching. Let's start with the base. I have got everything in here and I'm pretty excited. I'm also not very pro at makeup. This is how I do my makeup and this is very basic. Also, I will mention everything on the screen or in the description box. It will be easy for you to access. And so first I would start with the base. यूजुअली आई डोंट गो विद फाउंडेशन. अगर मैं कोई फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, कोई इवेंट में जाऊँ, तभी आई अप्लाई फाउंडेशन ऑन माई स्किन. अदर देन दैट मैं कोई टिंटेड मॉइस्चराइजर या टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ. सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ ईदर आई यूज़ दिस वन. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड कलर क्यूपिड, और या मैं कभी डॉटिन की यूज़ करती हूँ. ये थोड़ा 500 से ऊपर का प्राइस है. या फिर आई यूज़ लैक्मे 9 to 5 सन एक्सपर्ट क्रीम. टुडे आई एम फीलिंग लाइक यूजिंग दिस वन, तो मैं ये यूज़ करूँगी. सो दिस इज, ओ नो इट्स टू मच गाइस. मैं इतना नहीं लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया. मैंने यहाँ पे लगा लिया. तो इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत स्मूथ है और ड्राई स्किन के लिए सो गुड. और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ना, वो आपके ब्लेमिशेस ऐसे कम्प्लीटली हाइड नहीं करता. इट हैज़ लाइक मीडियम कवरेज. कैन यू सी राइट नाउ कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गया स्किन में. बस इतना ही काफ़ी है. वो बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने. मेक श्योर टू कवर योर नेक ऑल्सो. इतना ब्लेंडेबल है ये, बहुत ज़्यादा. और आप अगर ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं एंड यू लाइक अप्लाइंग समथिंग टू योर फेस, यू शुड डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस वन. ये ब्रांड इतनी फेमस नहीं है बट मुझे इसका ये बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ. इट्स अमेजिंग एंड ये बहुत टाइम तक स्टे भी करता है. मुझे लगता है कि अगर आप बिगनर हो एंड यू वांट टू लर्न, और अभी आपको प्रॉपर आइडिया नहीं है कि आप कैसे कैसे क्या यूज़ करना है, तो यू शुड गो फॉर कलर क्यूपिड बीबी क्रीम. इट्स अमेजिंग, ट्रस्ट मी. बिल्कुल नेचुरल ग्लो देता है. बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने फेस पे कुछ लगा रखा है. एज यू कैन सी आई हैव सम रेडनेस, तो कभी कभी मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर भी यूज़ कर लेती हूँ. यहाँ पे और यहाँ लगाऊंगी. ये मेरी थोड़ी शेड से ज़्यादा है बट कोई नहीं. मैं इसमें आईज़ को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए करती हूँ, जो मेरे को ब्लेमिशेस हो रखे हैं इसको करने के लिए. मुझे स्विस ब्यूटी के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं एक्सेप्ट फॉर देयर मेकअप स्प्रे. मुझे वो आई डोंट नो, मुझे नहीं अच्छा लगा वो कभी से. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको तो ठीक लगता है बट आई नेवर लाइक्ड इट. बेस इज लुकिंग फाइन. नेक्स्ट स्टेप इज़ blush, which is my favorite. So affordable option में I have two options, which is this one. इसका कैप गुम हो चुका है. ये ब्लू हेवन से है and it is around like 300 or 200 something. I don't know the exact price. And the second one is from the brand called Earth Rhythm. ये मैंने दोनों ब्लिंकिट से ही लिए थे and मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है. बट Earth Rhythm का थोड़ा लिक्विड टेक्सचर में है and ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. एंड दिस वन ऑब्वियसली थोड़ा लिपस्टिक फॉर्म में आता है. इसका भी थोड़ा टेक्सचर लिक्विड टाइप का ही है बट ये इजी टू ब्लेंड है. इसको बहुत आराम से इजीली ब्लेंड कर सकते हो. आई थिंक आई विल अप्लाई दिस वन एंड उसके बाद मैं ये थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूँगी. अब मैं कोई टेक्निक नहीं फॉलो करती कि W बनाना है, B बनाना है, A बनाना है. मेरे को जहाँ अच्छा लगता है मैं वैसे कर लेती हूँ. एंड सी कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है. और ये ना आपको एक हाइलाइटर का भी इफेक्ट देता है. तो दिस वन इज़ माई फेवरेट. मैं इसको आंखों पे भी लगा लेती हूँ. नाउ जस्ट ब्लेंड 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 ब्लेंड. आई थिंक इट्स फाइन नाउ. Now next is mascara. So again we have two options. One is from the brand called Mars. I have this one also. I don't know the price of it but मेरे को ये अच्छा नहीं लगा mascara. This is from the brand called Maybelline. ये mascara मुझे बहुत अच्छा लगा था. Can you see the difference? यानी काफ़ी लंबे टाइम तक रहता भी है. The only problem I faced with this mascara is जब आप इसको वॉश करते हो तब थोड़ी इसमें दिक्कत होती है. अदर देन दैट इट्स अमेजिंग. डू यू ऑल्सो मेक फनी फेसेस व्हेन यू अप्लाई मस्कारा? आई डू.
So guys, I don't do my eyebrows because eyebrows, yeah, I don't do my eyebrows because मुझे आती नहीं है और ऊपर से अभी मैंने threading कराई भी नहीं है. So I don't do anything. Last step, which is lipstick. So I have so many options in lipstick. हमेशा mostly जब मैं आसपास ही जा रही होती हूँ तो मैं यही लगाती हूँ. Lip color, it's beautiful pink color. This one is from Nykaa and ये थोड़ा brown tone की side आ जाएगा. Next option is this one. ये थोड़ा मुझसे टूट गया. ये Swiss Beauty का gloss है and this is amazing. ये बहुत प्यारा सा आपको tinted सा color देगा. So what will I do? I'll apply this one and मुझे ये भी लगाने का मन कर रहा है तो let's see क्या कलर आता है. Although थोड़ा makeup pink हो रखा है so I just want to apply pink. I think this much is enough. Let me apply this one too. What do you think? It's fine, but I think I should apply this more. भूत ना बन जाऊँ मैं. I'm kind of liking it. So yes, now I will layer it up with Swiss Beauty lip oil. आपने देखा कटरीना कैफ पहले इसके ऐसे glossy lips रहते थे. I used to love that. I still love it. Can you see? So guys, can you see the difference? I love applying lip gloss. The point is, lip gloss लगा के आपके lips थोड़े fuller लगते हैं. Fuller लगते हैं. I don't know. आप समझ रहे हो? Yes, that was it.